तो सबसे पहले इसके अंदर इफ़ेक्ट्स डालने होंगे, जिसमें हमने ऑडियो इफ़ेक्ट पे जाकर जितने भी हमारे ये इफ़ेक्ट्स हैं वो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देने हैं ऑडियो पे, और उसके बाद उनको जो है इफ़ेक्ट कंट्रोल्स में जाकर इन्हेंस करना है और चेक करना है। Check all audio effects and video by practice.